खाना पीना मेरा मतलब, और कुछ नहीं होता मेरे यहाँ मुसलमान आदमियों में। Assalamualaikum जी, दिस इज कमल मसरूर फ्रॉम CxO ग्लोबल फोरम। हम लोग एक तरह की नए इनिशिएटिव्स जो हैं हमेशा स्टार्ट कर रहे होते हैं, और हमारी कंट्रीब्यूशन होती है कि हम लोग स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए हम लेवरेज करें इंटरनेशनल मार्केट्स को भी, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करें। सो आई एम ग्रेटफुल कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के जो थोड़े से चैलेंजिंग टाइम्स हैं, इसमें हम सब लोग जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, और हम ये अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करना चाहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में ना सिर्फ पैसा लाया जाए बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्ड की जाए, क्योंकि मेन पावर तो हमारे पास है। तो इसमें मैं आई एम वेरी लकी टू हैव ऑल ऑफ दीज थ्री सीजनड एंटरप्रेन्योर्स जिनका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है, तो उनके एक सेंटिमेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ, और हम सब क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो गिव बैक करते रहें। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम, आई वुड लाइक टू थैंक यू थ्री ऑफ यू कि आपने ज्वाइन किया, और मैं चाहूँगा कि आप अपना शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन भी दें, सो दैट फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर फॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट कर लें। सो प्लीज़ उमर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच कवल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम, और आई थिंक सेकेंड और थर्ड टाइम में मुझे आपने इनवाइट किया, और इट्स वेरी गुड टू एक्चुअली शेयर एंड लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स जो यहाँ पे। सो मेरा बैकग्राउंड जो है, आई स्टार्टेड माई बिजनेस अबाउट 9 years बैक, और हम ई कॉमर्स में बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में जब क्वेश्चन किया था कि आप क्या करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान में 80 to 90% बिजनेस जो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं वो हमारे क्लाइंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज वी हैव बिल्ट all these payment integrations, logistic integrations, omni-channel solutions, and all of that in these 7-8 years. So yes, this is what we primarily do. We are an e-commerce and digital retail solutions company. So we have a lot of applications, और पाकिस्तान में हमारी रफली इस वक्त 300 बंदों की टीम जो है वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ 3-4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और जो यूएई में हमारा सेटअप है, बुनियादी तौर पे ये उसी कैपेसिटी को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करने के लिए डेवलप किया गया है पूरा सेटअप। Excellent. Thank you so much, Omar. Asif, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Jay, thank you so much, Kanwal. So this is my first time on CxO Forum, and I'm really excited. Thank you for inviting me. So I've been a technology enthusiast and a seller for the last 22 years. So I work with some of the largest big names in technology. So I work with Oracle in Singapore, in IBM in Middle East. और पिछले तकरीबन 18 साल से मैं मिडल ईस्ट में हूँ, predominantly covering GCC and Middle East emerging markets as well. So I have a good combination of working with large technology companies and doing my own thing as well. Right now I sit on a board of 4 startups, और हमने एक कंपनी शुरू की थी 4 साल पहले XpertDigital के नाम से, which specializes in digital banking software. So we have around 20 banks in about 10 countries that we serve from Pakistan. हमारे पास तकरीबन 150 लोग हैं in our technology center in Karachi. I'm based in Dubai, and we have an office in Oman as well. So we serve the region from our 3 offices in Oman, UAE, and Pakistan as well. So I work with some of the large central banks as well as oil and gas customers in Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, and Bahrain. So I have extensively traveled in Middle East, and I know a lot of customers here as well. Excellent. Thank you, Asif. Thanks for joining us. Adnan साहब, आपका short सा introduction. जी, अदनान सिद्दीकी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आपके सेशंस में शरीक हो चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितने यूज़फुल होते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ऑलमोस्ट ऑल माय करियर हैज़ बीन विद IBM, लास्ट 9 years in the Middle East. For the last 2 months, I am working full time on multiple initiatives. One is the main initiative, but the thing is, I'm the kind of guy who was I always felt that, after getting all this knowledge and all, I'm a hostage of a big corporate. In fact, not a big corporate, hostage of my salary. सुकून से महीने के एंड में आती है। सो हालात कुछ इस तरह के हुए कि खुद ब खुद इस तरफ आ गया मैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर डूइंग।
मैं कई अगेन स्टार्टअप्स के बोर्ड्स पे भी हूँ, एडवाइजर भी हूँ, लाइक हिसाब किताब के एडवाइजर बोर्ड पे हूँ मैं. हिसाब किताब इज डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल. Then Injaz है, which is Junior Achievement Pakistan, and other, by the way, they have been nominated for Nobel Prize. Not Injaz Pakistan, but Junior Achievement Worldwide. तो वो है. उसके अलावा मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जिसमें मेरा किसी ना किसी तरह से रोल रहा है पिछले 8-10 सालों में. ई कॉमर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ई कॉमर्स से मेरी वाबस्तगी जो है वो ई-बे की ज़माने से है, जो कि probably was the first one, big yes. e-commerce giant. क्योंकि IBM was the partner with eBay, और वो सारी IBM की टेक्नोलॉजी उस वक्त इस्तेमाल हुई थी and all that. So since then I've been in this. दुबई में जैसे मैंने कहा कि मैं कॉमर्स से शुरू हुआ, और कॉमर्स में we are talking about the whole suite of products and services that help run a successful e-commerce business, whether it's digital marketing, supply chain, order management, B2B integration, payments, e-commerce itself, right? So ये तमाम चीज़ें. And then I ended up in retail. क्योंकि शुरू से ही रिटेल में बिजनेस ज़्यादा था, तो then in the last 4.5 years, I was leading the IBM's retail industry business. Okay. In Middle East, Africa, and in Turkey, and that actually gave me a lot of insight into retail, जो मैं हमेशा से चाहता था. Retail, I loved retail, लेकिन ये कि और सर कौन सा रीजन था आपके पास ओवरऑल? आप मीना रीजन देख रहे थे या क्या आप? या पहले मैं पूरा रीजन देख रहा था, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड टर्की, राइट. लेकिन उसके बाद then when I came into retail, I was focused on UAE only, because when it comes to retail, दो ही बड़े यानी के hubs हैं, Saudi and UAE, and UAE is far bigger than Saudi when it comes to actual size of, I'm not talking dollar size, but actually the size of retail industry. Market, So and then I made it my industry, in the sense that I got all the IBM related certifications till the gold level. ठीक सर हम इस पे इंशाल्लाह आपसे फर्दर मजीद बड़ी डिटेल्ड आपसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे कि ये क्या किस तरह जर्नी रहा, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन रही रिटेल इंडस्ट्री की, और प्लस जो ई कॉमर्स का और कोविड के टाइम पे जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे. आई थिंक हम एक इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एज वी ऑल नो कि जी मीडिया स्पेशली जो हाइप एक जनरेट कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में है, फिर और भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो इस वक्त हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो ये देख रहे हैं कि हम किस तरह बाहर की मार्केट्स में जो है वो हम काम कर सकते हैं और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड की जा सकती हैं. ज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े एक सेटअप्स बनाए हैं और हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए, बट हम चाहते हैं कि हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करें. सेम गोज़ जो हमारी जैसे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे नर्चर कर रही है, क्योंकि बाहर काम है और लोग जो है किसी न किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम लाएँ. अपार्ट फ्रॉम कंप्लायंसेस, अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस वी आर फेसिंग, आज मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा बात करें कि क्योंकि आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को मीडिया की नज़र से देखते हैं या हम जैसे लोगों से बातचीत करके देखते हैं, क्या वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ये जो इस सिचुएशन को मैनेज कर सकें. ऑब्वियसली साल 2 साल हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बाहर की मार्केट्स में देखना है और वो किन के साथ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस कर सकते हैं. ये हम थोड़ा सा एक इन डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल डिस्कशन कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या हमारे पास लो हैंगिंग एरियाज़ हैं जिनको हम इंगेज कर सकते हैं. सो मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम उमर. आप आई थिंक कुछ चैलेंजेस की भी बात कर रहे थे कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आई वुड लाइक टू लिसन इट फ्रॉम यू एज वेल.
जी, सो बेसिकली जब हम कल भी इस पे हल्की सी हमारी गुफ्तगू हुई, वो यही बुनियादी पॉइंट ये था कि शायद इस पाकिस्तान इस वक्त उस स्टेज पे है कि जहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। जी, पाकिस्तान इस वक्त उस स्टेज पे है कि जहाँ पे हमारे लिए ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह यूएई की मार्केट को, खासतौर पे यूएई की जो इनेबलिंग मार्केट है उसको लेवरेज कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर आवर बिजनेसेस टू कंटिन्यू एज इट इज। बिकॉज इस वक्त जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्क में मौजूद है वो है डॉलर क्राइसिस, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड जो है वो स्पेंड नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट आपको डॉलर स्पेंड करने की इजाजत नहीं दे रही है। इसका मतलब है जब वो स्पेंड नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में उनकी वेबसाइट के ऊपर सेल्स भी नहीं आएगी, बिकॉज स्पेंडिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। जी ऐसे प्लस इवन जो ई कॉमर्स के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी इमरान साहब ने बताया आईबीएम की बात हो रही थी, शॉपिफाई है, मजेंटो है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको मंथली और एनुअल पेमेंट्स जानी होती है। अब वो सारी पेमेंट्स इस वक्त रुक चुकी हुई हैं या बहुत डिफिकल्ट है उनको उनको पे ऑफ करना अगर किसी की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं है, विच मीन्स के दिस इज द राइट टाइम कि किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएई का, जिसमें कॉमर्स सिटी की बात है, जिसमें मैदान फ्री जोन है, इफ्जा है, जो आपको वर्चुअल कंपनी सेटअप करने की ऑप्शन देते हैं, उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को पाकिस्तान टू यूएई एक लिंकेज क्रिएट करें, जिसके अंदर लॉजिस्टिक लिंकेज भी हो सकती है, पेमेंट्स एंड प्रोसेसिंग का सारा काम भी हो सकता है, ताकि आप बिजनेस को एज इट इज कंटिन्यू कर सकें। प्लस मैं इसमें एक हिडन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ठीक है इससे हम डॉलर क्राइसिस को किसी हद तक हैंडल कर पाएंगे, बट इसमें एक लॉन्ग टर्म हिडन अपॉर्चुनिटी है कि जो लॉजिस्टिक कैपेसिटी है मिडिल ईस्ट की, वो पाकिस्तान की बहरहाल फिलहाल नहीं है। हम उसको लेवरेज कर सकते हैं, हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स बनाना आसान हो जाएगा इस वक्त। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी सामने आती है, तो ये वो क्राइसिस सिचुएशन में शायद हमारे ब्रांड्स मजबूर हो जाएं अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने पे, और उनकी जो नेट सेल्स है इवेंचुअली वो इंक्रीज कर जाए, बिकॉज नाउ दे वुड हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द ग्लोबल बिजनेस। क्योंकि जो एवरेज सेल्स है हमारे किसी भी ब्रांड की पाकिस्तान के अंदर, वो रफली अराउंड 12 to 15% इंटरनेशनल सेल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 to 15% पे इंटरनेशनल सेल्स रुकी हुई है इस वक्त। लेकिन अगर यही ब्रांड्स अपने आप को ग्लोबल ब्रांड के तौर पे लेके आते हैं तो ये सेल का नंबर भी ऊपर चला जाता है। सो आई सी दिस एज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ कि एक वर्चुअल कंपनी, एक किसी किस्म का सेटअप यूएई में एस्टैब्लिश किया जाए और उसके थ्रू एक ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए बिटवीन बोथ कंट्रीज एंड बोथ एंटिटीज। सो ये डॉलर क्राइसिस भी उसमें हैंडल हो जाते हैं और ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स। सो दिस इज वन टॉपिक वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू उमर। आई थिंक जो आपने बात की वो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल, बिकॉज मैं भी इन्हीं चीज़ों पे पर्सनली एडवोकेट करता हूँ, ऑल्दो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि उस पर एग्री करें। लेट्स सी, आसिफ आप अपना कुछ इनपुट देना चाहें। जी, थैंक यू सो मच कमल। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज इस वक्त राइप हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो रुपये की डिवैल्यूएशन है, दैट मेक्स इट एन आइडियल प्लेस टू इन्वेस्ट फ्रॉम आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस पर्सपेक्टिव। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड है मेरा, ई कॉमर्स का नहीं है, तो आई गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम एन आईसीटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज पर्सपेक्टिव। हमारा अनफॉर्चुनेटली सो फार द डिलेमा हैज बीन कि हम लोग इन द आईटी इंडस्ट्री वी आर एक्सपोर्टिंग रॉ ह्यूमन कैपिटल। हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ले लें, फ्रीलांस कम्युनिटी ले लें, एंड इट्स अ राइप कम्युनिटी, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन हम वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी तक ग्लोबल लैंडस्केप में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। And I think what all we are doing in particular in the Middle East and GCC is that we are exporting human capital because that is easy to do. किसी को जावा के लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, ऑफ साइट मॉडल ऑन साइट मॉडल पे आउटसोर्स कर दें, मंथली इनकम आ रही है, दैट्स एन ईजी थिंग टू डू। अनफॉर्चुनेटली हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं देख रहे हैं विद इन दिस सेगमेंट वेयर यू बिल्ड अ प्रोडक्ट which gives you a consistent ARR on an annual basis. Unfortunately, मैं इसको generally relate करता हूँ textile industry से. It's exactly the same situation which happened in textile industry in the last 20 years. कि हम लोग अब textiles में भी सिर्फ yarn और cotton exports, which is around 50% of our exports, instead of value-added services have moved to Bangladesh and Vietnam. The same kind of a dilemma I see as an expat sitting in UAE and working with the companies. So I think there is a huge potential in building and investing products and services
especially with software as a service, provides a huge opportunity जहाँ पे आपको ना travel की ज़रूरत है और ना ही कुछ constraints हैं from a online business environment perspective. Second opportunity जो I also see is that there is a lot of capital investment which is available and offered in Middle East, especially in UAE and KSA these days. Abu Dhabi Investment Authority and Abu Dhabi Investment Office is spending, they have allocated 2 billion dirhams of fund to finance innovation. And out of that, you'll be surprised that there's only 2% is being offered to Pakistani companies because nobody from Pakistan is coming and competing for that kind of a funding. So from a ICT industry specific perspective, there is funding available, there is opportunity. Jitna KSA is वक्त domestic spend कर रहा है on capital projects, that's a huge opportunity for IT industry to capitalize on that. The challenge, I would just second Umar, कि we need to have presence. ये remotely नहीं होगा, Zoom calls पे नहीं होगा, सिर्फ trade shows से भी नहीं होगा. You need to spend in your sales activities, you need to have some presence in KSA, in Oman, in UAE. You need to show the face value in order to win that business. And I personally feel that the kind of investment anybody would be doing in this segment in Pakistan today will actually be very rewarding in the next 2 to 3 years because this is the right time. Companies की valuation low है, economy down है, you get the maximum out of your buck. Thank you, Asif. एक और quick मैं question आपसे जानना चाहूँगा because you actually run an IT company based out of Karachi or Islamabad? Karachi. So apart from हमारे freelancers क्योंकि काफ़ी बड़ी community है जो boom कर रही है पाकिस्तान में, आपको human capital का issue आता है पाकिस्तान में आ रहा है या आप ये समझते हैं कि नहीं it's a huge still we have a huge potential? Potential huge है, human capital का challenge है, human capital से ज़्यादा हमें training का issue है. The quality of resources which are available, they are not up to the mark. And like our success recipe has been that we do our in-house trainings. So any new person that we hire, we make them go through a 3 months training program. So we build our own kind of capacity building in order to be having a sustainable business. Otherwise, the churn is so high, churn के अलावा I think we are not getting the right kind of dollar value per resource that we should be getting as an industry in Pakistan. Thank you, Asif. दूसरा एक और क्वेश्चन आपकी बात के दौरान ही आ गया. So एक स्मॉल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? As you mentioned कि आपकी प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या लो हैंगिंग है कि कितना कोई सिंपल प्रोसेस है टू रजिस्टर कंपनी इन UAE एंड कमिंग अप as a physical office in UAE, कितनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है? उमर, आप भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो बताइएगा. Right. I think इस वक्त मार्केट वाइज इससे आइडियल टाइम नहीं है. जनरली इफ आई टॉक अबाउट UAE में 2 तरह के लाइसेंसेस होते हैं, फ्री जोन एंड मेनलैंड. जनरली दोनों की प्राइसेस, फ्री जोन की इट यूज्ड टू बी लोअर, जनरली 10 से 15,000 दिरहम्स में आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं इंक्लूडिंग वर्चुअल ऑफिस स्पेस. और मेनलैंड के अंदर दिस यूज्ड टू बी अराउंड 25 to 30,000 दिरहम्स. इस वक्त फ्री जोन भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ है, सो यू गेट बिटवीन 25 to 30,000 दिरहम्स. इसमें बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग इज ऑपरेशनल. So I think that's the kind of but right now KSA is another opportunity क्योंकि वहाँ पे they are opening up and they are encouraging international investors and IT companies to open up an office. So the environment of opening up and setting up is very conducive in KSA as well. Okay, thank you Asif. उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि जिस तरह KSA की बात हो रही है, KSA में हमेशा से हिस्टोरिकल चैलेंज रहा है कि आप 100% फॉरेन ऑनरशिप के ऊपर कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते. बट KSA हैव इनेबल्ड दैट एज वेल. लास्ट 2-3 ईयर से वो इस चीज़ को बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं कि आप 100% फॉरेन ऑनरशिप के ऊपर जो है वो अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं. इसी तरह जिस तरह UAE की बात उन्होंने की कि UAE में बहुत सारी ऑप्शन है. जो प्राइस रेंज आसिफ साहब ने जिक्र किया है, ये मोस्टली दुबई बेस्ड फ्री जोन्स की नॉर्मली ये प्राइस रेंज है. लेकिन अगर आपका समहाउ बजट कम भी है, so there are options in Sharjah and Ajman to actually register a free zone company on a lot lesser price
बिकॉज इवेंचुअली जब आप यूएई रजिस्टर्ड कंपनी हो जाएंगे तो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज करेगी। आसिफ साहब की बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है केएसए और यूएई यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसर्न होता है वो होता है कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो एससीसीपी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अभी स्टार्टअप स्ट्रक्चर को 100% सपोर्ट नहीं करते हैं। वेयर एज यहाँ पे जो हमारे पास होल्डिंग कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत प्रिवेल कर रहा है फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी भी रजिस्टर करवा लें जिसकी कॉस्ट इवन उससे भी कम है, सो आपके लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज किसी भी मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी होल्डिंग कंपनी में पैसे डालना जो कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में यूएई या सऊदीया में एग्जिस्ट करती है वो बहुत आसान है। बिकॉज वो सारे लॉज और गवर्नेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है स्टार्टअप का जो भी माइंडसेट होता है और जो भी स्ट्रक्चर चाहिए होता है स्टार्टअप के लिए। तो होल्डको का जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप एक फुल ऑपरेशनल कंपनी नहीं भी रजिस्टर कर सकते तो किसी ना किसी फॉर्म में अपनी प्रेजेंस जरूर आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। एक्सीलेंट, आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पता था कि यूएई में आप कोई होल्डिंग कंपनी जो है वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या कोई कोवर्किंग स्पेसेस भी ऐसे हैं, बिकॉज हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि वहाँ जाके वो अपनी कोई ऑफिस एक्वायर करे, बिकॉज रेंटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, कोवर्किंग स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और उसके अलावा बिजनेस सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल सीट का, जिसके अंदर आपको एक सीट, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की और आपको एक वीज़ा चाहिए उसके ऊपर, तो आपको एक वर्चुअल सीट एलोकेट हो गई जिसकी बड़ी माइनर सी शायद सालाना कॉस्ट 18,000 दिरहम के करीब सालाना कॉस्ट होती है उसकी। सो अब आपका रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया, सब कुछ उसमें कवर हो चुका है और अब आप किसी भी कोवर्किंग स्पेस में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एडिशनली जब मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की तो मुझे एक और ऑप्शन भी मिली जो कि आज भी अवेलेबल है। यूएई के अंदर एक एस्ट्रो लैब्स एक कोवर्किंग स्पेस है, इनेबलर है, गूगल सपोर्टेड। वो आपकी लाइसेंस फी को इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यू कैन पे दैट, क्योंकि वो डीएमसीसी जोन में आता है। डीएमसीसी इज एन एक्सपेंसिव जोन रिलेटिवली स्पीकिंग। सो वो जो वन टाइम फीस आपने लाइसेंस फीस पे करनी होती है 25,000 से 30,000 दिरहम के करीब जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो उसको एक साल की इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, which is linked with your seat within that co-working space. So that is a huge opportunity. यानी आप मंथली बेसिस पे 3500 दिरहम पे कर रहे हैं और आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो गई है, जो कि और सीट भी आपके पास वहां पे काम करने के लिए मौजूद है। सही, ठीक सर, थैंक यू सो मच। जी Kanwal, I would like to add one thing here. I think from financial support perspective as well, both Dubai and Abu Dhabi provide lots of programs to support entrepreneurs from other neighboring countries as well. जैसे मैंने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बात की, तो उनका ये जो फंड है उसमें if you have a good idea, if you have a setup in some other country, you can actually apply. They provide you seating space, they provide you visas, they provide you funding to have local people hired, as well as import your people from Pakistan and place them here. Very nice. 2 billion dirham का fund Abu Dhabi Investment Authority ने allocate किया हुआ है. So that's they have a place called Abu Dhabi Hub 79. And then Dubai Science Foundation, recently I came to know that they are giving in the tunes of around $3 million if you are a company which is operational in elsewhere in the world, especially like in Pakistan and India, and you want to bring your people here. So they are kind of supporting and financing your initiatives there. तो काफी सारी funding from government perspective is available as well. Excellent. So thank you so much. दूसरा, अगर आप सऊदी अरब में कोई कंपनी रजिस्टर करता है तो उसकी क्या टेंटेटिव वहाँ पे क्या खर्चा आ जाता है? अच्छा, उसके अंदर जो तो थोड़ी सी विजिबिलिटी मेरे पास है। ऑब्वियसली वहाँ पे जो इस वक्त मेन जोन एक्टिवेट हुआ था और उसकी जो कॉस्ट वर्किंग मैंने की थी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को भी वहाँ पे रजिस्टर करवाना चाह रहा था। सो द कोटेशन आई गॉट फॉर कंप्लीट प्रोसेस एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइसेंस दैट वाज 35,000 रियाल। ठीक है, दिस इज रफली अबाउट 8 महीने पहले की बात है। लेकिन एडवांटेज ये था कि क्योंकि एस्ट्रो लैब्स यूएई में भी सऊदी अरब में मौजूद था, तो दे आल्सो ऑफर्ड कि हम ये कॉस्ट भी आपकी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। कहने का मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, रास्ते बहुत मौजूद है, नियत होनी चाहिए काम करने की। चलें, ये तो आपने इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारे पास बहुत सारी कमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं कि आप मतलब इतनी कोई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज यही एक एक्चुअली एरिया जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा
साइलोज में बैठे हुए, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अदनान साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक बड़ा जर्नी है वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सपोर्टिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं स्पेशली, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आप समझते हैं कि हर कोई चाहता है कि जी मैं आईटी सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों की तरफ चला जाऊँ, ऐप डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊँ। तो एक तो हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया ज़रा दे दीजिएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं और क्या हमारे पास लो हैंगिंग है और आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। थैंक यू कमल। फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ और उमर ने जो बातें की, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पहले ही मिल गई। तो मैं जो सोच रहा था इतनी सारी बातें करने का, तो मैं थोड़ी कम बात कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। सर, हमें बड़े फ्लड ऑफ मैसेजेस आए हैं, इतने सारे मैसेजेस आए हैं। हाँ, जाहिर बात है भाई, दिस इज द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखिए, हम अभी तक जो बात कर रहे हैं, हम ज़्यादातर हम स्टार्टअप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, राइट। तो हमें थोड़ा सा एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, और बाकी चीज़ें भी मैं जो आपने पूछा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी चीज़ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एंड आई एम श्योर इन लोगों को पता होगा कि मैदान का जो फ्री जोन है इज द ओनली फ्री जोन विच गिव्स यू द facility that you take a free zone license, and then they will give you an approval to work in the mainland as well. That's the only probably free zone. It's probably owned by some, anyway, some group or something. Anyway, so that was just one point just I wanted to make, because it's an important point, because जब नई companies होती हैं उनके लिए यही problem होती है, free zone में जाएं, मेनलैंड में जाएं, फ्री जोन में जाएंगे तो मेनलैंड में कैसे काम करेंगे एंड ऑल दैट। ऑल्दो के there are no black and white, I mean there is nothing black and white, there's a gray area which I would prefer not to operate in, but obviously there is. So जहाँ तक ताल्लुक है मिडल ईस्ट में काम करने का और डॉलर बेस्ड पाकिस्तान को एक डॉलर रिच या फॉरेन करेंसी रिच कंट्री बनाने की बात है, तो मैं ये इस मुहिम पे पता नहीं कितने सालों से चल रहा हूँ, और मैं हर एक को ये बात, हर कंपनीज जो भी हैं इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं या जो भी मेरे कांटेक्ट में आती हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिग पाकिस्तानी कंपनीज, लोकल कंपनीज, उनसे मेरा यही हमेशा से कहना होता है कि एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट टैपिंग द UAE market, you are not tapping the Saudi market. Even if Pakistan's situation was not that bad, even then, of course, there was no comparison as in rupee earnings and dirham earnings, right? Or dollar earnings. It's the same thing, basically. So उसका मकसद ये है कि बेसिकली जब आप मिडल ईस्ट में काम करते हैं तो you get frankly more credibility for going beyond Middle East, right? That's another very important, right? जैसे कि शायद उमर ने कहा था कि या आसिफ ने कि वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी, that makes a lot of difference, right? दूसरी चीज़ ये कि जो बड़ी कंपनीज हैं हमारी, वो सालों से काम कर रही हैं पाकिस्तान में, बहुत कम थोड़ा बहुत बिजनेस उनका बाहर होता है एक आध कंपनी के अलावा, लेकिन वो भी जो हैं वो सारा का सारा ट्रेडिशनल काम कर रही हैं, जो कि कोई भी कर सकता है। कोई भी करना, इसका मतलब ये है कि आई मेट 4 young guys yesterday, I mean online, and they are among them and their friends are providing the same kind of service जो कि एक कोई बड़ी कंपनी दे रही होगी। Obviously there is no match in experience, there is no match in their financial strength and all that, but the point is you are still doing the same thing. So आप वही you keep milking the same old cow, जिसको ना सिर्फ आप मिडल ईस्ट में बल्कि हजारों और कंपनीज मिल करने की कोशिश कर रही हैं, राइट?
So that's one thing. The other thing is कि आसिफ ने बहुत सही point out किया कि every company is just trying to place their people in the organizations, right? Now that is first of all not high margin business. One. The second is you are simply not making sure that you will stay in that organization, right? आप कदम अपने जमा नहीं रहे वहां पे. I have seen companies, पाकिस्तानी companies, 2 लोगों से शुरू किया, 200 लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने प्लेस किए हैं. Everybody can be replaced, right? Everybody can be replaced either slowly or whatever. So the point is, when you are in an big organization, you have got 200 people. Why not get into high margin business within the same organization, right? Anyway, so this is one thing. Another thing is a lot of big Pakistani groups who have not ventured into IT or have ventured into IT, but at the Pakistan level, they are now thinking about, coming out and opening offices here in Dubai and looking after, Qatar and Saudi and all that, which they should have done a lot earlier. But still, this is the time for them. But the most important thing that I would suggest is that always go look for the niche area, right? Now, the point is, and you may be a little surprised because Fawad Chaudhry, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे एक ज़माने में, वो खुद भी कहते थे कि मुझे आईटी का और इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है. बट द थिंग इज कि उनकी बेसिक्स मुझे बहुत खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि उनकी बेसिक थॉट बड़ी क्लियर थी. So I talked to him and then we started working on something. Unfortunately, like it's Pakistan, we could not. Political instability aa gayi thi, bilkul sahi. Right, but the point is, what was that? Right, that was basically that it's not just IT. And when we say IT, we are basically talking about very basic stuff which everybody is doing. You just look at any plan from any company, which I keep looking all the time. एक ही किस्म का चार्ट मुझे नजर आता है जिसमें वो 25 सर्विसेज लिस्ट की हुई होती है उन्होंने, जो हर एक बिल्कुल ठीक है. तो 2 पॉइंट्स हैं इस पे जी. 2 पॉइंट्स मैं कहूँगा. एक तो आसिफ ने बहुत अच्छी एक बात की कि हमारी जो जितनी भी वर्किंग है पाकिस्तान में एज अ सर्विस इंडस्ट्री, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे पास नहीं है. ऑल्दो जैसे अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हर प्रॉब्लम या चैलेंज के साथ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज ओपन होना शुरू हो जाती हैं. एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखना शुरू कर दिया है. सो एक तो लेट सपोज जैसे हमारा एज कम्पेयर टू इंडिया हमारा डॉलर जो कन्वर्जन है वो हमारे लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज जिनको पहले $2000 पाकिस्तान भेजने होते थे, अब वो $500-600 में उनका काम हो जाता है. द सेकंड थिंग इज कि जो बीपीओ या कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा हमारा एक गैप है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूएस एंड यूरोप मार्केट्स जो हैं वो इंडिया इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर दिस. सो आई थिंक हम लॉन्ग टर्म पे क्या ये भी एक एरिया है जिसको हम प्लान कर सकते हैं. एंड सेकेंडली ये कि जी सॉरी जी पहले मुझे लेट मी देखिए यार, you can do whatever you want to do which is already happening, बिकॉज हम हर एक चीज, वही बात आपने जैसे कहा ना, एक ही काव को हम जो है वो यूज कर रहे हैं. तो मतलब हाँ, तो मतलब अब बीपीओ अगर कहते हैं आप, तो बीपीओ है पाकिस्तान में. बीपीओ सर्विसेज कई कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, आप और लोग भी कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि यार मैं सर इंडस्ट्री नहीं बनाई ना हमने, हम इंडस्ट्री नहीं बना. हाँ, तो सर वो बनानी है ना, कभी तो शुरू करना है, राइट? ये तो नहीं कह सकते हम कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल डू इट. दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट टाइम टू डू इट. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप डेटा एआई में काम करें चलें, आप ERP इम्प्लीमेंटेशंस करें, आप बीपीओ करें, आप मैनेज सर्विसेज करें, जो दुनिया में हो रहा है वो करें, आपको बिजनेस मिलता है आप जरूर करें. द पॉइंट इज कि अगर आपको ग्रो करना है at a higher multiple, so there are opportunities which you should focus on. Right now,
this is and what are those opportunities? मिसाल के तौर पे, right? Operational technology, right? पहले सिर्फ हम IoT कहा करते थे. Now we are calling it operational technology. Now this is something which is where you use IT and specifically artificial intelligence and devices and robotics to basically automate industries, right? और ये चीजें हुई भी हैं दुनिया में बहुत जगहों पे, ठीक है, लेकिन लोअर लेवल पे शायद इतना नहीं हुई हुई है. दिस इज एन एरिया वेयर देयर इज नोबडी. आई मीन देयर आर पीपल बट वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ so there is a big blue ocean over here. इसी तरह जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैंने अभी तक कोई सीरियस एफर्ट नहीं देखा मेटावर्स के हवाले से, राइट? Serious effort in the sense के not metaverse for the sake of glorified gaming की बात नहीं कर रहा मैं, या glorified जो movies होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं. I'm talking about applications in specific areas, right? यानी in specific industries जहाँ पे उनकी demand या उनकी application ज़्यादा है, right? How many Pakistani companies have got into that? Very few. Very few, right? Now this is the area. Middle East में 40 सर्विसेज उन्होंने अनाउंस की. मिडल ईस्ट मतलब यूएई दुबई में 40 सर्विसेज उन्होंने अनाउंस किए हैं जो कि वो मेटावर्स पे मूव करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट? फिर उसके बाद अबू धाबी गवर्नमेंट ने उन्होंने अपना अलग इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया है. So what I'm saying is कि get into these kind of things which are new, right? And there are very few people, very बड़ी कंपनीज, Accenture, EY, ये वो सब ने अपने बड़े इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हुए हैं. और जब आप जाके उनसे मिलेंगे पता चलेगा उनके पास लोग नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, एंड दे डिडंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड. इस वजह से उन्होंने किए हैं. लिथियम, मैं आपको ये मिसाल सिर्फ आउट ऑफ आई मीन जस्ट टू एक्सप्लेन, हमारे मुल्क में लिथियम मौजूद है, राइट? बहुत ज्यादा नहीं है कि हम टॉप 15 में नहीं है, बट वी हैव गॉट लिथियम एंड वी एक्सपोर्ट लिथियम. कोई लिथियम बैटरीज बनाता है हमारे मुल्क में? किसी के पास टेक्नोलॉजी है? हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कम से कम मैं जो जानता हूँ वो चंद पाकिस्तानीज हैं जो कि लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी सप्लाई चेन में किसी ना किसी जगह इन्वॉल्व हैं. वो पाकिस्तान से कभी क्यों नहीं काम करते? So the thing is, we need to realize these new high margin areas, right? We need to collaborate, right? I'm not talking about, and I apologize, please, my friends at Pasha, don't get mad at me, but I'm not talking about Pasha kind of collaboration, right? That's a nightmare since 1980s. I'm talking about real collaboration where, like, let's say, जैसे मैंने उमर से कहा, मैंने आसिफ से कहा कि यार मिलते हैं, right? मैंने क्यों कहा इनसे मिलने के लिए? Because definitely we will have some overlaps, but we definitely will have some things that we can add to each other's portfolio, right? This kind of collaboration will help us fight against other countries, other companies, Indians हैं और लोग हैं, right? So this is also something very, very important. You have to innovate in the way you keep the supply chain or of human resource going, right? Now, I have fortunately done it twice in Pakistan, right? And I'm doing it again now for keeping the supply chain going for the expertise that I want, right? Okay. But the thing is, this should be done at a far higher level or broader level, right? उनको और यूनिवर्सिटीज को उसके लूप में लेकर आए. You need to have networks जिसमें से आप skills pick कर सकें. Luckily, I am part of such a network.
जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, and it's nothing but a non-profit effort to bring everybody on the same platform. और उस पे होता कुछ नहीं है, उस पे सिर्फ हम सेमिनार्स वगैरह कराते रहते हैं, लोगों को बुलाते रहते हैं, all that. But the most important thing is कि whenever we need some kind of skill, right, जो कि हमें कहीं नहीं मिल रही होती है, and we मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ, and we find a PhD from KPK teaching in Bauddin Zakaria University. Right, a PhD, young guy, PhD from KPK working in Bauddin Zakaria University. Luckily, he's in the network, and we told him that, yeah, this is the thing that we have to do. And he said कि मैं इन छुट्टियों पे जो है गाँव नहीं जाऊंगा ईद पे. अच्छा. Right. So एक और भी चीज देखने की है कि he's from a village, by the way, right? But Okay. he is now a PhD and a professor. So मैं 6-7 दिन की छुट्टियां हैं, मैं गाँव नहीं जाऊंगा. Get me a concept paper. We got him the concept paper before Eid, 2 pages, and after Eid he had not a running MVP, but an MVP concept complete in every aspect in 7 days. Right? So we have to use these kind of techniques. राइट, जहां आपकी ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई चेन जो है ना वो चलती रहे. और एक और भी चीज लास्ट, मैं बहुत कुछ, लेकिन मैं और हॉग नहीं करूंगा, वो मैं अकेले आसिफ और उमर से बात कर लूंगा, और अगर कभी मौका मिला तो मैं प्रोबेबली आई विल डू अ. नहीं सर, हम करेंगे. अब ये आई थिंक इस तरह की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे बाहर के पाकिस्तानी हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरे मुल्कों में भी जाइए और सजेशंस हम लोगों से लीजिए. हम आप लोगों को बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, आप जाइए वहाँ पे, उनसे कांटेक्ट कीजिए. लास्ट जो मैं बात करने वाला था, अनफॉर्चुनेटली अब वो चलें रिकॉल हो जाएगी. मैं सॉरी, वो मेरे जहन से निकल गई, लेकिन बहरहाल मुझे याद आई तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. अच्छा उमर, क्योंकि आपका एक बड़ा डीप एनालिसिस है वर्किंग विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ई कॉमर्स की मीनिंग्स काफ़ी हद तक जो है वो बदल गई हैं सिंस द अमेज़ॉन एंड FBA एंड ऑल दीज थिंग्स. और उसकी एक और सिनेरियोज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए, बिकॉज पाकिस्तान में वो इंडिविजुअल्स जो किसी न किसी तरह इन्वेस्ट करके या अच्छे खासे जो है वो डाल के, और उसके बाद जो है उनके जहनों में ये डाल दिया गया है कि आप जो वो इतने डॉलर्स और इतने करोड़ों रुपए जो है वो कमा सकते हैं, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये मिथ ज़रा, क्योंकि मुझे खुद भी इस बारे में इतना नहीं पता, ये थोड़ा सा अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी इस तरह के मैसेजेस आए हुए हैं कि इस पर भी ज़रा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द लो हैंगिंग चीज़ है जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, बुनियादी तौर पे जो अमेज़ॉन या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो 2 तरह के लोगों के लिए या 2 तरह की एंटिटीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है. एक फ्रीलांसर्स के लिए, वो उनके लिए एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी है. पीपल हु आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग, स्पेशली जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है. तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर वुमेन प्राइमरली, और जो घर से काम करना चाह रही हैं, या इवन जो लोग भी घर से काम करना चाह रहे हैं एज अ सेकंड इनकम के तौर पे. दूसरे ये जो छोटे ब्रांड्स हैं, जब वो स्टार्ट लेते हैं, आप कोई नई प्रोडक्ट बिल्ड किया आपने, और अब आपको पता है कि मेरे पास बहुत बड़े बजट्स नहीं है कि मैं अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूं, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अमेज़ॉन, सेलिंग दैट प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन. बट इवेंचुअली इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, जो कि अभी अदनान साहब भी उसी तरफ पॉइंट कर रहे थे कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, व्हिच इन माय टर्मिनोलॉजी हमें अपने ब्रांड्स बिल्ड करने हैं इवेंचुअली. जो लिथियम बैटरी की बात कर रहे थे. जी बिल्कुल ठीक. जी बिल्कुल. लिथियम बैटरी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी डायरेक्शन की बात हो, आसिफ साहब ने भी इसी तरफ पॉइंट आउट किया था. तो अगर आपने इवेंचुअली अपना ब्रांड बिल्ड करना है, तो फिर आप अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे सस्टेन नहीं कर सकते, उसको ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज अमेज़ॉन जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो एक सर्टन रैट रेस डिमांड करता है आपसे, एक सर्टन लेवल ऑफ एग्रेसिव फॉलो अप और एक्टिविटीज और अमेज़ॉन की कंप्लाइंस. और किसी भी दिन कोई एक कंपीटिंग प्रोडक्ट आएगी, किसी ने थोड़ा सा बेहतर काम किया, यूर आउट. ठीक है, अमेज़ॉन की कुछ जरा सी पॉलिसी चेंज होगी, आपकी प्रोडक्ट डिस्क्वालीफाई होगी, यूर आउट, आपका पूरा अकाउंट बंद हो गया. उमर,
sorry to cut you here. Amazon पे सेलिंग करने से या एफिलिएट बनने से बेहतर है कि यार आई वुड डू डे ट्रेडिंग, आई विल मेक मोर मनी बिकॉज द हैसल एंड द स्ट्रेस इज द सेम. जी, लेकिन देखिए हमें डिफरेंट लोगों के साथ देखा ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म पे लर्न करने की अपनी एक लर्निंग कर्व है, एक टाइम है, एक इन्वेस्टमेंट है. सो उसके बाद जब आप उस स्टेज पे आते हैं जहाँ पे आपको ब्रांड बनना है, देन Amazon इज नॉट योर चॉइस. Then you have to invest on your own website, your own portfolio, your own branding, your own positioning end to end. So yes, Amazon can be a good opportunity for small businesses to start off and freelancers, but it is not a sustainable brand building platform to think about. और जो आपने जिस confusion की आपने बात की है पाकिस्तान में, अब हमें recently बहुत ज़्यादा face करना शुरू कर दिया है कि जब हम अपनी कंपनी को पिच करते हैं किसी के सामने, तो वो पहले ये सवाल करते हैं कि आप हमारा Amazon पे स्टोर बना के देंगे. तो हम कहते हैं कि हमारा Amazon से कोई ताल्लुक नहीं है, वी आर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर. आपको Amazon बनाना है तो आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन हम आपको Amazon पे स्टोर बना के नहीं दे सकते बिकॉज वो किसी मार्केटिंग कंपनी का या सप्लाई चेन कंपनी का काम है बुनियादी. सो यस, ये कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना है इसको कि अगर आप प्रोडक्ट सेलर हैं तो आपके डिफरेंट डायरेक्शन आपको ले रही हैं, लेकिन इफ यू आर अ ब्रांड तो फिर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है और अपने ब्रांड को टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बिल्ड करना है अपने ब्रांड को. अभी एक सिर्फ बात में टच करता जाऊंगा. अदनान साहब ने एक बात का जिक्र किया Web3 का, जिसमें मेटावर्स ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल Web3 कॉन्सेप्ट. यूएई ने अभी अनाउंस कर दिया, मैं एक हफ्ता पहले शायद न्यूज पढ़ी है, फर्स्ट मेटावर्स इनेबल्ड और अ वर्चुअल फ्री जोन, विच मीन्स कि अब आपकी जो कंपनी रजिस्टर होगी वो यूएई आके नहीं होगी, वो पाकिस्तान से बैठ के हो जाएगी और वो 100% वर्चुअल कंपनी होगी और उसका ऑफिस भी वर्चुअल होगा और वहीं पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही लोग आके ट्रेड भी कर रहे होंगे, बिजनेस ले भी रहे होंगे, दे भी रहे होंगे. ऑब्वियसली अभी ये बिल्कुल लॉन्च फेज में है, इसके रिफाइनमेंट में साल 1.5 साल लगेगा, बट दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग. और नेचुरली हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको इस डायरेक्शन में प्रोडक्टाइजेशन करनी चाहिए, हैवीली करनी चाहिए. और ये प्रोडक्टाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए नहीं है, ये प्रोडक्टाइजेशन और सर्विस क्रिएशन नॉन टेक्निकल सेक्टर के लिए भी है. मतलब आप जो इंटीरियर डेकोरेटर है वो उस फ्री जोन में अपने आप को रजिस्टर करे, बिकॉज उस फ्री जोन में वर्चुअल ऑफिसेज भी किसी ने डेकोरेट करने और उसकी भी कॉस्ट होगी. सो ये पूरा का पूरा वर्चुअलाइज होना है, तो एवरी सर्विस कैन बी वर्चुअलाइज देयर. ठीक हो गया. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक बात करूंगा कि ये तो मेटावर्स की बात हो रही है या Web3 की बात हो रही है, और एज एप्पल इज कमिंग आउट विद मिक्स्ड रियलिटी, उनकी टर्मिनोलॉजी इज मिक्स्ड रियलिटी. सो बेसिकली कॉमर्स सिटी जो है, ऑलरेडी देयर इज एन ऑप्शन which is not completely virtual, but you don't have to be in Dubai for that, right? You can have a virtual office. अगर आप logistics चाहिए तो वो logistics वो खुद ही provide करते हैं, logistics companies are there, everything is there. The only thing is that you don't have to be in Dubai. You can be anywhere in the world. Now, what Umar is saying, of course, that's even more exciting and easily accessible to people, I would assume. Okay, क्योंकि कॉम्पिटिटिव तो महंगा है डेफिनेटली. सही है. अच्छा, और ये जो एक दूसरी सर्विस होती है उमर, जैसे कि अब बहुत सारे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कोई वाइट लेबलिंग होती है या कोई प्रोडक्ट आप अलीबाबा से उठाते हैं एक एक्स अमाउंट पे और वो आप अमेजोन पे बेच रहे होते हैं ऑन वाई अमाउंट पे. इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये इतना गैप होता है या वाकई ऐसा कुछ है. देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये फ्रीलांसर बिजनेसेस हैं, ये इंडिविजुअल बिजनेसेस है. एक बंदा उसके पास टाइम है, वो घर बैठा है, या एक खातून है घर बैठी है, वो प्रोडक्ट सर्चिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उनको एक प्रोडक्ट मिली और उन्होंने देखा कि यही कंपीटिंग प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्लाइटली महंगी बिक रही है, उन्होंने वहां से खरीदी और वहां बेच दी. इट्स अ सिंपल ट्रेडिंग मैकेनिज्म, लेकिन दिस इज नॉट सूटेबल फॉर बिजनेसेस, फॉर ब्रांड, दिस इज फॉर फ्रीलांसर. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को और घर में बैठ के जो लोग काम करें उनको इसको लेवरेज करना चाहिए. भाई इन द एंड तो डॉलर ही आएंगे ना, तो आने दें डॉलर्स को. सो और दूसरा, इससे दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैं देखता हूँ, एक तो वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, प्लस वो किसी ना किसी किस्म की स्किल तो बिल्ड कर रहे हैं जो कल को पाकिस्तान में मौजूद ब्रांड्स को रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ब्रांड्स को इवेंचुअली वो सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए.
वो SEO की स्किल है, वो कंटेंट राइटिंग की स्किल है, वो ग्राफिक डिजाइन की स्किल है, वो कोई भी स्किल है। तो इन एनी केस उसको डिस्करेज मैं कभी भी नहीं करता। हाँ, सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ कि भाई डिफरेंशिएशन क्लियर रखो। इफ योर ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज ब्रांड बिल्डिंग, दैट्स नॉट योर रूट, देन वो आपका रास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक छोटी मोटी इनकम कर रहे हैं, आप अकेले हैं, आपने घर चलाना है, आपके पास और कुछ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है ग्रो करने का, तो आप कम से कम उसकी बेस पे अपने सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन उमर, मैंने चंद केसेस देखे हैं कि जिसमें इंडिविजुअल्स ने ये चीज़ शुरू की है या एक दो लोगों ने मिलकर ये शुरू की है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने और लोगों को शामिल किया है उसमें, और अच्छा खासा वो बड़ा बिजनेस तो नहीं कहूँ, आई मीन इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड बिजनेस, बट अ ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स, राइट? आई डोंट नो, देयर शुड बी अ गुड नेम फॉर दैट, एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड बिजनेस, राइट? कि उनको पता होता है। इसमें सॉरी आपकी बात काट दी, इसमें हमारा पूरा सियालकोट इसकी एग्जांपल है। सियालकोट वालों का, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई सियालकोट से है कि नहीं, कोई ऑफेंस ना ले ले इस बात का, लेकिन सियालकोट इन जनरल ब्रांड बिल्डिंग के खिलाफ लगता है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर है जिसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है कि आपने अपना ब्रांड नहीं बनाना, ठीक है। आपने जब भी काम करना है, व्हाइट लेबल करना है, चुप करके इधर से प्रोडक्ट बना के किसी बड़े ब्रांड को बेचनी है या फिर अमेजोन पे बेच देनी है। तो मुझे ये फीलिंग आती है। एनीवे, हालांकि दिस सिटी अलोन हैव ह्यूज कैपेसिटी टू बिल्ड मल्टीपल ब्रांड्स, स्पोर्ट्स में, सर्जिकल में, लेकिन वो पता नहीं पूरे सिटी को ब्रेन वॉश कर दिया, क्या किया गया है, सोचते ही नहीं ब्रांड के बारे में। नहीं को सर सबको पता है, इट्स डेलिबरेट दैट दे डू नॉट वांट टू ब्रांड, और अगर वहां से ब्रांड्स निकलते हैं तो उनको कलेक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। आई हैव ट्राइड in Faisalabad and especially Sialkot. Tremendous people, by the way. I mean, tremendous entrepreneurs, everything. But they are very happy कि यार पीछे बैठ के white label अपनी products दे दें, brands उस पे जर्मनी के लग रहे हों और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी के brands लग रहे हों, और वो उनको उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको ये है कि वो फिर जो बड़ी कंपनीज हैं वो compete होने की वजह से वो बिजनेस कहीं और ना ले जाएं। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली। वो हमारा सिस्टम कॉन्फिडेंस देता ही नहीं ना, एंटरप्रेन्योर के, बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है। हमारे पास जो फवाद चौधरी के साथ हमारा पूरा प्लान बना था, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उसका क्या हाल है, राइट? सो वो जो अभी ये बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड हो कंपनी तो फिर उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती बिकॉज जो अथॉरिटीज हैं या वो लोग हैं जो दोज हु हैव टू मेक श्योर that everything is done right according to standards and environmental policy makers हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या करती हैं तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कैसी हैं वो कंड्यूसिव नहीं है। बिल्कुल सही है। that needs to be built as well. Unfortunately ये हो रहा था और फिर रह नहीं गया। सर, वो बड़े आई थिंक इंडस्ट्री डायलॉग की जरूरत है। बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हूं, बिल्कुल सही है। दिस विल हैपन, आज नहीं कल होगा, एंड these things will happen इंशाल्लाह। सर आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ बिकॉज हमारे पास एक काफ़ी बड़ा एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स का एंड थॉट लीडर्स का एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है UAE बेस्ड एंड सऊदी अरब। तो इंशाल्लाह हम लोग एक इस तरह का एक प्लान करते हैं आप लोगों के साथ मिलके कि हम कोई इस तरह को कोई प्रॉब्ली एक हेल्प का वो हम एक कॉर्नर एक डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी हैंड होल्डिंग हो जाए या उनको थोड़ा सा असिस्ट किया जाए UAE बेस्ड। तो मुझे एक तो इसमें ये भी बताइएगा, दूसरा ये भी बताएं कि आप फर्दर क्या प्लान्स हैं, कहाँ किन किन एरियाज़ में आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकती है, और किन एरियाज़ में यू गाइस कैन कोलैबोरेट और वहाँ पे आप एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। मे बी दे कैन अप्रोच यू वाया CxO ग्लोबल फोरम, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे हो सकती हैं, एंड देन पाकिस्तान के लिए आपके क्या प्लान हैं? राइट, आई थिंक एक फंडामेंटल इशू जो मैंने पाकिस्तान में एज एन इंडस्ट्री देखी है, दैट अप्लाइज टू ई-कॉमर्स एज वेल, जैसे अभी उमर और अदनान साहब ने बात की। पाकिस्तान एज ए नेशन वी आर नॉट सेलर्स, चाहे हम IT पे हों, चाहे हम ई-कॉमर्स में हों, वी आर
afraid of taking bold decisions and going and launching our own brand. हमारी Very true. orientation ऐसी हुई है, and because maybe the socio-economic situation of last 20 years is such कि अगर मुझे आज थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो मैं उस पर खुश हूँ, instead of compromising on that money in order to build something bigger in let's say 1 to 2 years. The same is the case जो अभी discussion हो रही थी brand versus Amazon, कि आपको अगर आज थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, आपका घर अच्छा चल रहा है, you are making some extra money out of that, you are happy with that, you don't want to take a bold decision of going out there and competing with the world. Plus आपके पास वो resources भी नहीं है कि आप global brands के साथ बहुत ज़्यादा compete कर सकें. One of the fundamental issues other than from e-commerce मैंने IT sector में देखा है, we do not have good IT sales guys out there. हमारे यहाँ जितने भी आप expats देख लें, अदनान साहब को देख लें, इन जैसे और senior लोगों को देख लें, इन सब लोगों ने over a period of time experience से learn करके they have built a mark for themselves, right? But there is no, चाहे मैं academic देख लूँ, academia में there is no IT sales courses whatsoever. Even जो पाकिस्तान में local sales के भी लोग हैं, apart from some of them, उन्होंने भी अपनी hit and trial से ही experience gain किया है. If I compare this to let's say Egypt or Jordan or even India, वहाँ पे people have gone out, they have curriculums to support IT sales skills. And I think that's fundamental issue. सिर्फ ऑफिस UAE में खोलने से आप बिजनेस नहीं रन कर सकेंगे, सेल्स नहीं कर सकेंगे. You need to have the right people in country. They need to build relationships locally. Trusted advisor बनना पड़ेगा. And you need to, जो मैंने शुरू में बात की थी, you need to spend face time with the local to understand the culture, to build reputation in order to sell yourselves, whether it's your product, your services, or even an IT solution. So I think उसके ऊपर हम लोग लैक कर रहे हैं. Partially issue ये भी है कि हम कहीं जाना होता है हमें, तो हमें visas नहीं मिलते या 2-2 महीने लग जाते हैं visas में. But that's something that we cannot control, right? So what we can control is, and I feel on the forum like CxO Global, I think that's a forum where we can kind of enable our technology companies and their sales teams for going international and competing in the global markets. Because what we are doing is that, as Adnan Sahab said, we are doing Me Too. हर किसी को जावा डेवलपर्स चाहिए, मैं भी जावा डेवलपर आपको दे दूंगा. So there is no differentiator, there is no competitive advantage. लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप वो competitive advantage identify भी नहीं कर सकते और ना ही उसका कोई solution build कर सकते. You need to travel, you need to meet people. Adnan साहब क्यों ये gap identify कर पा रहे हैं? Because he has traveled, he has met people in the region, yes, so he can articulate the opportunity which is out there. I am a strong believer that in order for Pakistani companies to excel internationally, they need to start going out, meeting people, understanding what are the local dynamics, and instead of continuing with the Me Too kind of an approach. इसमें मैं एक चीज और बात करूंगा कि अगर हम कुछ सक्सेस स्टोरीज भी देखें पाकिस्तान में, so especially in digital banking की अगर मैं बात करूं, so we have seen those companies who have consistently invested and they have performed well as well. So मैं अगर banking की बात करूं तो हमारे पास दो बहुत बड़े नाम हैं, TPS and Avenza. Now these are an amazing local success stories के जिन्होंने locally start किया, they spent good 10-15 years and now they are exporting in Middle East, in Africa, in other regions as well. लेकिन थोड़ा सा time लगा और उनको उसमें invest करके मेहनत करनी पड़ी थी. इसी तरह की और बहुत सी tier 2, tier 3 companies हैं which are doing very well. So I feel कि I think entrepreneurs and especially in IT services companies, they need to have regional presence. They need to have the right people. एक और fundamental issue जो मैंने खास तौर पे IT companies के साथ operating in Middle East and abroad is कि we are afraid of hiring non-Pakistanis. Now I know this is a controversial thing and I don't want to discourage कि जी हमें अपनी community को नहीं support करना चाहिए, लेकिन हम अगर सऊदी में जाके ऑफिस खोल रहे हैं तो we would try our best कि हम सारी टीम पाकिस्तान से लेके जाएं और वहां पे बिठाएं. Now there is no harm in hiring a Jordanian seller
a local seller, an Egyptian जिसके Arabic पास एक्सेस speaking है, seller, बिल्कुल सही। जिसके पास एक्सेस है, जिसको लैंग्वेज की इश्यूज नहीं है. So let's be open with that, क्योंकि he will open up the relationships for you, जिसको आपको क्रिएट करने में शायद 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाएंगे, and that will be difficult for you to sustain your business at that time. So I think we need to have more globalized approach. हम अभी मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं. I do a lot of business in Africa as well. अफ्रीका में इस वक्त इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली इन द कन्वेंशनल बैंकिंग स्पेस बट इवन ई कॉमर्स में भी. अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का वही हाल है जो पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले था. So if somebody who has been successful in Pakistan now, they have an ideal opportunity to go into countries like Ethiopia, like Zambia, like Zimbabwe. So the only point is that we are afraid to go out, and I think if anybody is doing any investment, they need to earmark an amount for international sales, कि जिसमें वो लोगों को groom करें, place करें, so that they build a long-term value for the company as well. On CxO Global Forum, I think that's a brilliant idea to ensure. एक चीज का आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कवल, that everybody is there running their own businesses. So होता ये है कि whenever these initiatives come in, people may not be able to give that much time, right? So I think if we can have a pool of people, we would love to support the community and give them these programs as well, where they can go internationally and maybe give them some ideas as well. Just say lithium battery is an amazing idea, but I don't know if somebody is working on that. And I think the entrepreneurs in Middle East have the right connections as well. So if somebody out there who is in Pakistan who has the right skill set, right idea, I think we as expats can serve as a bridge to fund those ideas and to take those ideas globally or in the region as well. Asif, later on, let's discuss this thing. That how can we do this and how can we probably use, because we need, as you said, we need a place or an organization or somewhere which CxO Pakistan can be, who actually orchestrate the whole thing, and then we can come in and go and whatever time we can give, and so we can do that. One more thing which Asif has mentioned twice, and I cannot emphasize enough, that people have to be on the ground, right? People have to, there is no other way. I mean, I have been bombarded in the last year or so with questions related to how we can work in the Middle East. और ज़्यादातर ये होता है कि वो ये कहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मिडल ईस्ट में कोई कंपनी है, हम उससे पार्टनरशिप कर लें. या नो, it won't work, right? I have tried that at a big corporation. I have tried it at any other place. No, it doesn't happen, right? Unless you are in consumer product business and you are a big product producer, it doesn't happen like that in IT. So you have to. The other thing is, by the way, and this is the mindset of some of the very, very big companies. Why don't you sell on our behalf? Right? I mean, fine. So what does that mean? Should I open your office here? No. As an individual with your contacts, आप हमें जो है वो लाके दें leads, and हम आपको इतना % दे देंगे. It doesn't work like that, right? You have to work. There is something called a sales cycle, right? Relationships are important, but just because I'm good friends with somebody, right? He's not going to give business to me, right? So he will see कि मैं किसको represent कर रहा हूँ, उसका presence कहाँ पर है, उसकी depth कितनी है. And by the way, मेरा ख्याल है अब टाइम खत्म ही होने वाला है. जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं लाइव पे. एक मैं अच्छी बात बताना चाहता हूँ
अच्छी भी है बुरी भी है कि there are companies. There is one specific company whom I spoke to, and they wanted to create their presence in Pakistan, and from there do a lot of work for the international market. And this itself is a billions of dollars company, and they were talking about thousands of people, right? And they came very close to starting in Pakistan, and then whatever happened, right? And in the meanwhile, they started in Egypt, right? Now they still need people, because Egypt में भी कोई unlimited supply नहीं है जो लोग समझते हैं. So they will still need people, और वो कह भी रहे हैं कि we are waiting and watching, right? So what I'm telling you is that there are these kind of opportunities as well, right? The only thing is, unfortunately, हमारा जो इस वक्त हालात हैं, but anyway, there are solutions to these as well, and we can talk about them. Those नेक्स्ट वीक हम इस तरह का एक और सेशन इंशाल्लाह रखते हैं, और उसमें हम आपस में पहले एक एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कि हम फर्दर इस पे करें, बिकॉज जिस तरह के हमारे पास मैसेजेस आए उसमें लगता है कि भी लोग जो है ना, दे हैव लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल. अच्छा उमर, अगर आप कुछ लास्ट में कुछ ऐड करना चाहें जो सेशन में, सो दैट हम इसको वाइंड अप करें सेशन को. अच्छा देखिए, मेरे पास इस वक्त कुछ स्पेसिफिक इस रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन बात तो नहीं करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे 2-3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज की बात हुई है, उसमें हम एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह अभी अदनान साहब ने भी जिक्र किया, लिथियम बैटरीज की बात की, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट की, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की. सो एक बहुत मैं ये समझता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन जो ओवरऑल पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, दे आर वेरी रेजिलिएंट, because Pakistani government throughout our 70 years of history, especially political government, they had been playing a role of a disabler rather than an enabler. जो गवर्नमेंट का काम होता है वो enabler का काम होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मोस्टली disabler का काम कर रही होती है. तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो बड़ा रेजिलिएंट रहा है थ्रू आउट, वो हर तरह के हालात से आगे निकला. तो अभी भी एक जनरल अपील यही मैं क्रिएट करना चाहूंगा कि क्योंकि इस वक्त मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट सेंटिमेंट देख रहा हूँ. मे बी पिछले 2-3 साल लोगों के अंदर एक काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो गया था प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर कि अब शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, और फिर ये एक इंटरवेंशन हो गई और चीजें रुक गई, तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो गया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब मुल्क छोड़ देना चाहिए, अब मुल्क को छोड़ के चले जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, इमिग्रेशन लो और जान छुड़ाओ इससे, क्योंकि 70 साल भी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा. और शायद आंखें भी बहुत ज्यादा खुल गई हैं, सबको पता लग गया कि 70 साल से क्या हो रहा था इस मुल्क में. तो मैं सिर्फ एक जनरल अपील करना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और हमें वो रेजिलियंस जो हम 70 साल से दिखा रहे हैं वो अभी भी दिखानी चाहिए, और समहाउ वेज निकालने चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए कि ये इक्वेशन बनी रहे, क्योंकि कभी ना कभी तो ये इक्वेशन टर्न आउट होगी पॉजिटिवली. अगर लेकिन हम हिम्मत हार के पीछे हट जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन पॉजिटिव टर्न आउट कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट एग्जिस्ट करता है बिजनेस में. उमर, मैं उमर से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगा ऑब्वियसली कि देखें, शर्मिंदगी होती है ये बात कहते हुए जब हम बाहर बैठे हुए हों और मशवरा दे रहे हों उन लोगों को जो बेचारे बहुत ही परेशानी में हैं, बट स्टिल फैक्ट यही है कि इस मुश्किल वक्त को गुजारना है, और ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, राइट? इसकी वजह ये है कि स्टेटस को तो कभी भी नहीं रहता, राइट? और जहां तक जिस हाल तक हम पहुंच गए हैं, देयर हैज टू बी समथिंग. अगर कोई मुझसे ये कहता है कि जी इमरान खान की वजह से ये हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, राइट? तो मैं ये कहता हूँ, मतलब इमरान खान ने जगा दिया सबको और इमरान खान ने जो है वो सबको खड़ा कर दिया, फाइन किया होगा यकीनन, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम जिस मुकाम पे आ गए थे ये होना था, राइट? लीडर के बगैर भी हो सकता था, यू नो, बिकॉज बहुत पूरी हिस्ट्री भरी हुई है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें लोग स्पॉन्टेनियसली बाहर निकले हैं और लीडर तो बाद में इमर्ज हुए हैं, राइट? तो हम ये होना था.
इस दफ़ा जो ज़रा लोग ज़्यादा परेशान हैं और ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं और ज़्यादा घबरा गए हैं, वो ये कि हम हमेशा एक तरफ देखते थे कि यार ये लोग तो मुल्क को बचा ही लेंगे, राइट? अनफॉर्चुनेटली अब उस तरफ भी कुछ नहीं है, राइट? बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली there is no hope on that side as well. That is the नहीं, problem. इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। आप किसी गोरे से बात करें जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में, या किसी मल्टीनेशनल से बात करें जिसके ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, they say that कि हमेशा हमें ये उम्मीद होती थी कि यार formally or informally there is a place we can go and get things resolved, right? Now there isn't, and it's not the judiciary. I'm sure you understand. I'm not talking बट ये कि आई थिंक मैं उमर की बात को सेकंड करूंगा कि हम जैसे लोग एक काफ़ी बड़ी एग्जांपल है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा सकता था और आई थिंक इससे 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता था, इससे ज़्यादा बड़े रेवेन्यूज बना सकता था। बट आई थिंक हम जैसे लोग या ऐसे बहुत सारे लोग, दे आर द होप ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हैं दे लुक टुवर्ड अस और हमें ये देखते हैं कि जी हम उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बिल्ड कर सकते हैं। और आज का वेबिनार भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था, जहाँ पे हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए दरवाजे ओपन किए जाएं। हम तो अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो स्पेंड कर चुके हैं, एंड वी हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी और हमारी साइकिल चल रही है। बट वो नए लोग जो अभी थोड़ा सा क्लूलेस हैं, उनके पास इस तरह के आइडियाज़ नहीं हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोशल मीडिया से जो उन्होंने गेन कर लिया उसको उन्होंने यकीन कर लिया और फिर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर लास्ट ईयर जो हमारा इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो है वो सिचुएशन बिल्कुल एक वियर्ड सी हो गई है। बट स्टिल वी आर द होप, वी ऑल आर द होप, आप जैसे लोग भी, हम जैसे लोग भी, और हम इंशाल्लाह ये बार को और पाकिस्तान के फ्लैग को रेस करते रहेंगे और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल लड़ते रहेंगे। वी आर रेजिलिएंट पीपल और इंशाल्लाह ये टाइम भी निकल जाएगा और इससे भी टफ टाइम्स आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी देखे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। और आप लोगों ने टाइम दिया, हमने आज बहुत सारी, मैंने खुद ज़ाती तौर पे आज बहुत कुछ लर्न किया आप लोगों से, और आई थिंक इस तरह की सेशंस को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी दुबई का भी इंशाल्लाह एक मीटअप रखते हैं, हमारे 2-3 मीटअप्स तो पहले हो चुके हैं, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह एंगेज करेंगे वन बाय वन, सबको फिर सेपरेट कॉल करेंगे कि हम लोग इस तरह का कोई मीटअप करते हैं इंशाल्लाह। ईद के बाद फिर हम लोग प्लान करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वैल्यू देने का, आप लोगों के कमेंट्स देने का। थैंक यू सो मच। Thank you for giving the opportunity. Thank you, Ji. Thank you.